बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस क्या होती है और वो किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर साइंस कैरियर के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं। यूजुअली वी रिप्लेस अ स्टेटमेंट विद एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है पी एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x, और फिर जब हम उसमें वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम अगली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं और फिर फाइनल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के साथ उसको रिप्लेस कर लेते हैं और उससे हम जवाब अपना हासिल कर लेते हैं। तो ये हमारा एक आम प्रोसीजर है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द रिप्लेस स्टेटमेंट एंड द रिप्लेसिंग स्टेटमेंट बोथ हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे इस में देखें कि ये स्टेटमेंट जो है इसको मैंने इस स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस किया, दोनों की ट्रुथ वैल्यू इक्वल है, दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, इस वजह से मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। सिंपल प्रोपोजिशन, अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोपोजिशन। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं ये कहूँ कि जी लेट्स से दैट 3x², तो इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ सिंगल प्रोपोजिशन। या लेट पी हम बात करते हैं यूर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास एक सिंगल प्रोपोजिशन है। ओके, कंप्लेक्स प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन फाउंड बाय जॉइनिंग टू और मोर प्रोपोजिशंस। अगर हम P और Q इन दोनों को कनेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ तो ये हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंप्लेक्स प्रोपोजिशन बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या है? अ सिंपल और कंप्लेक्स स्टेटमेंट विच ऑलवेज रिजल्ट्स इन ट्रू, दैट इज कॉल्ड अ टॉटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन, अ प्रोपोजिशन विच ऑलवेज रिटर्न्स इन a result false. Contingency, a proposition which is neither tautology nor contradiction. तो ये तीन डेफिनेशंस हमारे पास आ गई। एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, टू प्रोपोजिशंस P and Q are said to be logically equivalent, जो इस तरह से हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ P implies Q and Q implies P is a tautology. यानी then we can write this P is logically equivalent to notation to denote the logical equivalence. यानी ये नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस को नोट करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम अगली स्लाइड में देखते हैं, और अगर आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ इक्विवेलेंस का, लॉजिकल इक्विवेलेंस का, तो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस एग्जांपल्स, डी मॉर्गन लॉ। De Morgan laws are logically equivalent. ठीक, example, show that not P or Q is equal to not P and not Q are logically equivalent. तो De Morgan law can also be extended. यहाँ देखें कि ये हमारे पास De Morgan law है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड के, और इसी तरह दूसरे लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड में। अगर हम इनका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करें तो ये ट्रुथ टेबल दोनों साइडों के बराबर होंगे। या नीचे जो ट्रुथ टेबल दिया हुआ है उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n number of variables. For example, here we have one variable. So P1 is one variable, or P2 second variable, or P3 and so on up to Pn. तो हम n वेरिएबल के लिए इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं और इसका हम नॉट ले लेते हैं। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस नॉट P1 एंड नॉट P2 एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास रूल है डी मॉर्गन का, उसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर आर्बिट्रेरीली n वेरिएबल्स। नाउ वी ट्राई टू प्रूव दीज, लेट्स से दैट वी प्रूव दिस द सेकंड रूल ऑफ डी मॉर्गन लॉ यूजिंग ट्रुथ टेबल। हमारे पास P है, Q है, P और Q हम फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका हमने नॉट ले लिया विच इज़ F, F, F एंड T। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये वाली। देन
वी फाइंड नॉट P, नॉट Q, नॉट P एंड नॉट Q, ये वाली चीज़, ये राइट हैंड साइड हमने फाइंड की और वो ये निकल आई। अब अगर हम इन दोनों कॉलम्स को देखें तो ये दोनों कॉलम्स इक्वल हैं, जहाँ पे ये F है फॉल्स है, उसी जगह के ऊपर उसके राइट हैंड साइड भी फॉल्स है, एंड सो ऑन। तो इन दोनों के चूंकि बराबर रिजल्ट्स निकल आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। आप एक स्टेटमेंट को दूसरी से रिप्लेस कर सकते हैं। एज एन एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करें कि इस स्टेटमेंट को इसी तरह से ट्रुथ टेबल बना के वेरीफाई करें कि क्या ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित होती है या नहीं होती है। इस स्लाइड के ऊपर हमें समझ आ गया कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है और उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस हमारे पास कुछ उसके रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लॉज हैं। मसलन आइडेंटिटी लॉज हमारे पास क्या हैं कि P एंड ट्रू दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, यानी अगर P में ट्रू वैल्यू दे दें और उसका एंड लें ट्रू के साथ तो जवाब ट्रू ही आएगा, यानी वही वैल्यू आएगी जो P में है। और अगर हम P में फॉल्स ले लें और उसका एंड लें ट्रू के साथ तो जवाब फॉल्स ही आएगा, इन अदर वर्ड वही वैल्यू जो कि P में है। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा रूल है आइडेंटिटी लॉ, PRF दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। डोमिनेशन लॉ वी हैव अनदर वन, PRT। अगर हम डोमिनेशन लॉ को देखें तो यहाँ देखें कि P और T तो वो जवाब T ही आएगा, क्योंकि R ऑपरेटर में हम जानते हैं कि कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो जवाब ट्रू होता है, लिहाजा P फॉल्स रहे या ट्रू रहे जवाब ट्रू आएगा। इसी तरह से P एंड F, एंड ऑपरेटर में हमने देखा है कि एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाए तो जवाब फॉल्स आता है। तो चूंकि हमने यहाँ पे फॉल्स प्रोवाइड कर दिया है, वट एवर द वैल्यू ऑफ P की कोई भी वैल्यू हो जवाब फॉल्स ही आएगा। तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉज हैं, जैसे PRP वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एक P को और एक P बाकी रह जाता है, दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। सिमिलरली P एंड P वो भी P के बराबर ही हैं, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। डबल निगेशन लॉ, डबल निगेशन लॉ में क्या है हमारे पास कि जी एक दफ़ा अगर नेगेटिव हम ले रहे हैं तो हम दोबारा नेगेटिव ले लें, ठीक, किसी भी प्रोपोजिशन का एक निगेशन लेने के बाद अगर दोबारा से निगेशन ले लें तो वो प्रोपोजिशन ओरिजिनल हालत में आपको मिल जाता है, इसको हम कहते हैं डबल निगेशन लॉ। देन वी हैव कम्यूटेटिव लॉ विच इज़ PRQ दैट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू QRP। इन लॉज को हम देख चुके हैं पहले अपनी स्कूल क्लासेस के अंदर, सो दीज लॉज आर नॉट न्यू फॉर अस। एसोसिएटिव लॉ PRQRR, यानी आप पहले P और Q का R ऑपरेशन ले लें, प्रोसेस ये कर लें और उसके बाद उसका R के साथ करें, या आप पहले जो है Q और R का R ऑपरेशन ले लें और उसके बाद उसका P के साथ R लें, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। एसोसिएटिव लॉ, देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज़ सिमिलर, डी मॉर्गन्स लॉ जिसको हम पिछली स्लाइड के ऊपर देख चुके हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ, दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। P एंड Q अगर हम इन दोनों को एंड लें, इसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर उसका P के साथ R ले लें तो P ही हमारे पास जवाब के तौर पे आ जाता है। हाउ दिस हैपन्स, इट्स सिंपल वन। देखें अगर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो हमें क्या मिलता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि PRP ये आइडेम्पोटेंट लॉ के हिसाब से ये हमारे पास P आ जाएगा और PRQ जो है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से भी हमारे पास P की वैल्यू ही सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे P जो है वो ट्रू होगा तो ट्रू को हम इसके साथ अगर एंड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा और उस केस में हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट निकल आएगा, ठीक, ट्रू एंड ट्रू ट्रू बन जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे फॉल्स आ गया एंड दूसरी साइड पे जो भी रिज़ल्ट निकल आए टोटल आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। तो इस लिहाज से एब्जॉर्प्शन लॉ भी हमें क्लियर हो गया कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो एक बेहतरीन एक्सरसाइज होगी कि आप जाके इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और उसमें देखें कि क्या एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है इसके या नहीं। एंड देन वी हैव द निगेशन लॉज, P R not P it becomes true, P and not P it becomes false।
तो ये वो लाज हैं कि जो हमें बहुत इजीली हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस किस्म के मिलते जुलते लाज हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ाए हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम ऐसी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि जिनमें कंडीशनल ऑपरेटर मौजूद है, वो कैसे एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। P implies Q is logically equivalent to not P or Q। अगेन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है इन सब के लिए कि आप इनके ट्रुथ टेबल्स क्रिएट करें और फिर उसमें देखें कि क्या ये वाकई लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इसी तरह से P implies Q जो है, not Q implies not P, P or Q इसके बराबर है, एंड सो ऑन। Logical statements involving biconditional statements. If P is true, then Q is true, and if Q is true, then P is true. यानी if P then Q and if Q then P, दोनों साइडों के ऊपर जो है इसकी implication मौजूद है। So it means that P implies Q and Q implies P, ये logically equivalent हैं। P implies Q और P biconditional, इसको हम इस तरह से भी represent कर सकते हैं। This could also be represented like this, and not P biconditional could be represented like this। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस की, एग्जांपल्स हैं। एज एन एक्सरसाइज आप लोग इनका ट्रुथ टेबल बना के इनको वेरीफाई ज़रूर करें, पेपर में ये आ सकती हैं चीज़ें। प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी, सेटिस्फाइबिलिटी ट्रुथ टेबल, सेटिस्फाइबल ट्रुथ टेबल वैल्यूज असाइनमेंट, यानी हम इस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करें कि जवाब हमारा ट्रुथ में निकल आए, इसको हम कहते हैं सेटिस्फाइबल ट्रुथ वैल्यूज असाइनमेंट। A composite propositional statement is satisfiable if there are truth values when assigned to it produces the result as true. Unsatisfiable statement, एक ऐसी स्टेटमेंट के जिनको हम कोई भी ऐसा कम्बिनेशन ट्रू फॉल्स का असाइन ना कर सकें कि जिसका जवाब ट्रू में निकल आए, उसको हम कहते हैं कि दिस इज अनसेटिस्फाइएबल। एग्जाम्पल, डिटरमिन वेदर each of the compound proposition is satisfiable or not satisfiable। अगेन इनको प्रूव करने का तरीका वही है कि आप इनके लिए ट्रुथ टेबल क्रिएट करें और देखें कि क्या ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से सेटिस्फाइबल होते हैं या नहीं होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा जो एक्सप्रेशन टॉप पे दिया गया है, क्या ये सेटिस्फाइबल है या नहीं है। P are not Q and Q are not R and R are not P। तो P and Q are the variables। इन वेरिएबल्स के जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो हमने यहाँ लिस्ट कर दिए, ठीक है। दीज आर द इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस जो हमने इससे सॉल्व किए, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वाली वैल्यूज़ असाइन करें वेरिएबल्स को, तो हमारे पास जवाब जो है वो ट्रू में निकल आता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइबल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारा सेटिस्फाइबल है, एंड सेम वी कैन लुक ओवर हियर। ठीक, तो तीन हमारे पास ऐसे इनपुट के कम्बिनेशन हैं जो अगर हम अप्लाई करें तो ये सेटिस्फाइबल रिजल्ट हमारा क्रिएट कर देते हैं। इट मीन दैट ये स्पेसिफिकेशन या ये कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है या सिस्टम स्पेसिफिकेशन है या हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, अगर हम ट्रू में गेट कर सकते हैं तो इट्स इम्प्लीमेंटेबल। एप्लीकेशन ऑफ सेटिस्फाइबिलिटी, मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास नज़र आती हैं। एज ए गेमिंग के अंदर ये इस किस्म का सुडोको पजल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सेटिस्फाइबिलिटी कि जी कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स असाइन करें ताकि हमारा टोटल जवाब ट्रू में रहे। और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उनके अंदर भी जो है सेटिस्फाइबिलिटी थ्योरी इस्तेमाल होती है। अब थोड़ा सा यही चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ के ज़रिए से दिखाने की कोशिश करता हूँ और इनको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से सुडोको पजल काम कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे डेटाबेसेस के अंदर किस तरह से सेटिस्फाइबिलिटी काम करती है। Hello my fellow YouTubers, welcome to this video on how to play Sudoku.
I created this video for absolute beginners. This video covers the very basics of Sudoku, how the puzzle is set up, and the rules. I have other videos with basic strategies and videos where you can follow along as I solve the puzzle, but this video is strictly meant to be an introduction for the uninitiated. Let's get one thing straight about Sudoku. It is not math. We use numbers to fill in the spaces, that's true, but those are just symbols. We could use any other set of 9 symbols to solve a Sudoku puzzle. Here is one using shapes. There are 9 different shapes that must be used to solve this puzzle. And here is another Sudoku puzzle using animals. You get the idea, right? You can use any 9 symbols or letters for Sudoku, but it's a lot easier using the numbers 1 through 9. That's because they are convenient and easy to recognize symbols, and since the puzzle requires 9 different symbols, it's much easier to use the numbers 1 through 9. So, Sudoku doesn't have anything to do with math except that it uses numbers or digits as symbols. But it does use logic, which happens to be a branch of mathematics. We are not interested in doing calculations. We are interested in working out the logic behind where the digits need to be placed on the grid to solve a puzzle. To get started, we need to know some basic terminology that is used in Sudoku. There are many different types of Sudoku puzzles, but the most standard form looks like this, a 9x9 grid. Here you can see that a 9x9 grid means that there are 9 rows and 9 columns. At the intersection of each row and each column, there is a square called a cell. Anyone familiar with Excel spreadsheets will recognize the word cell. Because this is a 9x9 grid, there are 81 squares or cells. When we look at a 9x9 grid with 81 cells, we need a way to refer to each cell's location. We do this by using the rows and columns as cell references. Let's refer to the rows by using the letters A through J, and let's refer to the columns by using the numbers 1 through 9. Each 9x9 grid is broken down into smaller groups of cells that are 3x3, that is 3 rows and 3 columns each. You can see this area with a red box around it. It is a 3x3 area consisting of 3 rows and 3 columns, making up 9 cells. An area like this is called a block. Some people also call it a box or a region, but it is more often referred to as a block in Sudoku books. Now let's take a look at the entire 9x9 grid, and you can see that the 9x9 grid is made up of 9 of these 3x3 blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here you can see all 9 blocks labeled. Each block is made up of 3 rows and 3 columns for a total of 9 cells in each block. We can look at the 9x9 grid in terms of groups of blocks. We have 3 groups of blocks looking across the rows. These blocks are grouped horizontally. Here you can see 3 sets of horizontal blocks. A set of 3 horizontal blocks is called a rank. We have the top rank, the middle rank, and the bottom rank. We can also look at the same 9x9 group in terms of vertical blocks. Here you can see the blocks marked off vertically. That is going down in 3 groups of vertical blocks. 1, 2, 3. A set of 3 vertical blocks is called a stack. Here we have the left stack, the center stack, and the right stack. Just to review, a 9x9 Sudoku puzzle is made up of 3 sets of horizontal blocks. Each of these is called a rank, and they go across horizontally with a top rank, a middle rank, and a bottom rank. And then we have 3 sets of vertical blocks, and these are called stacks, and they go down vertically. These are referred to as the left stack, the middle stack, and the right stack. As you may know, the idea behind Sudoku is to fill in the numbers 1 through 9 in each of the rows going across. There are 9 rows. In each of the columns going down, there are 9 columns, and in each of the blocks, there are 9 blocks. The numbers 1 through 9 must be used without ever repeating a number more than once. So, how do we play Sudoku? When you start a Sudoku puzzle, you will see a 9x9 grid. That means 81 cells that are partially filled in with some numbers. The easy puzzles have more numbers filled in. The harder puzzles have less numbers filled in.
To solve the puzzle, you must fill in the entire grid of 81 cells with the numbers 1 through 9. Let's take a look at a solved Sudoku puzzle to see what the endgame is. Here you can see the same 9 by 9 grid, but now it is almost completely solved. You can see that there's still one cell remaining to be solved. Now, if you understood everything I've said so far, it's very easy to figure out which number belongs in that cell. First, let's remember the rules. We must use the numbers 1 through 9 in every row, every column, and every block once and only once. Let's take a look at the first row. Here we see the numbers 1 through 9 are all accounted for. You can see a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So this row is completely filled in. Now take a look at this column. You can see all the numbers 1 through 9 are filled in this column as well. Now let's take a look at this block. All the numbers except for 1 are filled in. The missing number will complete the puzzle. It is also missing a number going down this column and across this row. If you count, you can figure out which number is missing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8. 8 is missing. So that is the one and only number that fits in this cell to complete the puzzle. Here is the solved puzzle. Every row of 9 cells has all 9 digits filled in. Every column of 9 cells has all the digits 1 through 9 filled in, and every 3 by 3 block has all the digits 1 through 9. No number is repeated in any row, column, or block. By now you get the idea. Now you need to try a puzzle on your own. The best way to start playing Sudoku is to just do it. Here's a great way to start. Go to the Washington Post website. You can use the link here. So what is this mysterious SAT problem? So SAT stands for Boolean Satisfiability. Of course, that also doesn't tell you very much, but I'll soon get into what Boolean Satisfiability is. You should just note that SAT is one of the most famous and most studied problems in theoretical computer science, and it's the basis of many landmark results. So it's always a good idea to familiarize yourself with what SAT is about and why SAT can be so hard to solve. So what is the Boolean satisfiability problem? The input for SAT is a so-called Boolean formula, and that actually sounds much more intimidating than it is, because Boolean formulas are very simple structures. They consist of only 4 building blocks. As any kind of formula, we have variables, and those variables I'll write in this course usually as x1, x2, x3, and so on. And the nice thing about these variables is, so in a normal formula, whenever you have x, that can take a number of different values, but in a Boolean formula, a variable x can only take 2 different values. It can either be true, which is sometimes also written as a 1, or it can be false, which is sometimes also written as a 0. The second thing you can have in a Boolean formula is an operator called not. And how you write that is, if you say have a variable x1, then this here would be not x1. Or if you have x2, this here would be not x2. And what the not does is it turns a true into a false and vice versa. So it also turns a false into a true. So for example, if x1 equals true, then not x1 equals false. So it basically just flips that variable. Then you have another operator, and that one is called and this and is usually written like this. And it works on 2 variables. So you have x1 and x2, or any other variable. And the way it works is that this expression here, x1 and x2, is true only if x1 is true and x2 is true. Otherwise, it's always false. So I'm going to write this as 1s and 0s here, just to make it a bit shorter, but you know that 1 stands for true and 0 stands for false, so it's the same. So 0 and 0 equals 0, 0 and 1 equals 0, 1 and 0 equals 0, and only 1 and 1 equals 1. And the final component of a Boolean formula
is another operator called OR, and OR is written just the other way around. So it's written like a flipped AND. So it's x1 or x2. And as the name already suggests, that is set to true or set to 1 if at least one of these variables here is set to true. So 0 or 0, that will still be 0, but 0 or 1 will be 1, 1 or 0 will be 1, and 1 or 1 is also going to evaluate to 1. So let's practice this in a little quiz. Let's say you have the following Boolean formula. x1 or not x2 or x3 and not x1 or x2. And we're going to have that x1 is equal to true or 1, x2 is equal to true, and x3 is also set to true or 1. Is this whole formula equal to true or is it equal to false? So please select this button here if you think the whole formula is equal to false or 0, and please select this one here if the whole formula is equal to true or 1. जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर. आई होप कि जो कंसेप्ट्स हमने आज के लेक्चर में पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.